Assalamu alaikum students. Illustration number 3. Anita, Sunita and Kavita were partners in a business, sharing profit and losses in the ratio of 2:1. The balance sheet as on 31st March 2019 is as under: liabilities, capital underline Anita 40,000, Sunita 40,000, Kavita 20,000. Creditors 30,000, bills payable 2,000, bank loan 8,000. Now asset side, plant and building 55,800, investments 30,000, furniture 16,000, debtors inner column 20,800, less RDD 800, outer column 20,000, bank 8,200, goodwill 10,000. Balance sheet total is 1,40,000, 1,40,000. On 1st July 2019, Kavita died and the following adjustment were made. 1st जुलाई क्या हो रही, कविता डाइड मर रही है, मीन्स अब वो बिजनेस में कितने दिन रही, 3 महीना रही. ओके. नंबर 1, ऑल द डेटा वर कंसिडर एज गुड. मीन्स वॉट, जो हमने आरडीडी निकाले थे वो आरडीडी अभी है ही नहीं, सारे डेटर्स जो है गुड डेटर्स है, मतलब कोई हमारे पैसे डुबाने वाला नहीं है. ओके. सेकेंड, अ कंटिंजेंट लायबिलिटी फॉर अ कंपनसेशन ऑफ ₹900 वॉज प्रोवाइडेड. मीन्स वॉट, एक नई लायबिलिटी क्रिएट हुई कॉल्ड कंटिंजेंट लायबिलिटी. क्लियर. Third, investment were sold out in the market at 10% profit. हमारा इन्वेस्टमेंट कितना का था, 30,000 का. इसके ऊपर हमने 10% प्रॉफिट लगा के इसे बेच दिए. 30,000 का 10% कितना होता है, 3,000. तो हमने इन्वेस्टमेंट कितने में सेल किए, 33,000. नेक्स्ट, लोन वॉज पेड ऑफ, मतलब पूरा का पूरा लोन जो है पेड कर दिया गया. Next, land and building were depreciated by ₹800 and furniture by ₹1,100. लैंड एंड बिल्डिंग में कितना डेप्रिसिएशन हुआ, ₹800 और फर्नीचर पे कितना हुआ, 1,100. नेक्स्ट, गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यू ₹15,000. इट वॉज टू बी रेज इन द बुक. फर्म का गुडविल कितना हो रहा, 15,000 रुपीज़, राइट. मतलब 50,000 से हमने रेज किए. ऑलरेडी हमने गुडविल कितना लिखे थे, 10,000 रुपीज़. अब वो बढ़ के कितना हुआ, 15,000. मीन्स 5,000 का गुडविल जो है रेज हुआ है, ये पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा एज पर देयर रेशियो. 7, कविता वॉज एंटाइटल्ड टू गेट हर शेयर इन प्रॉफिट अप टू द date of her death. Profit for 2019-20 was estimated ₹10,000. 10,000 रुपीज़ हमने एस्टिमेटेड प्रॉफिट किए थे. ओके. और कविता बिजनेस में कितना रही, सिर्फ 3 महीना. सो 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 3/12 और कविता का शेयर कितना था, 1%. सो 1/5. And last, the amount due to Kavita executors was paid by NEFT. जो भी कविता को अमाउंट देना था वो हम एग्जीक्यूटर्स को पे करेंगे थ्रू NEFT. ओके. प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म. क्लियर है. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द सॉल्यूशन. First heading,
in the book of the firm, revaluation account, next partners capital account, then balance sheet as on 1st July 2019. So we solve the question. First we see balance sheet liability side, capital account, Anita, Sunita and Kavita. This transfer to partners capital account, credit side, by balance brought down, Anita column 40,000, Sunita column 40,000 and Kavita column 20,000. Okay. Next, creditors transfer to balance sheet liability side, creditors, outer column 30,000, bills payable 20,000, transfer to balance sheet liability side, bills payable 2,000, then बैंक लोन 8,000. अब यहाँ पे क्या बोला गया है, बैंक लोन वॉज पेड ऑफ. ओके, लोन वॉज पेड ऑफ. तभी हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड लिखेंगे बैंक लोन, इनर कॉलम अमाउंट रुपीज 8,000. ओके, क्या हमें ये एडजस्टमेंट के थ्रू इससे बराबर टैली करते हैं. क्लियर. नेक्स्ट कम टू असेट साइड. नंबर 1, प्लांट एंड बिल्डिंग. ट्रांसफर टू असेट साइड, प्लांट एंड बिल्डिंग, अमाउंट इज 55,800. दैट इज एन एडजस्टमेंट. तो हम क्या करेंगे, इनर कॉलम लिखेंगे 55,800. नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट 30,000. अगेन दैट इज एन एडजस्टमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट. सो वी राइटिंग इनर कॉलम इन्वेस्टमेंट 30,000. Furniture 16,000. Again that is an adjustment on furniture, so we write in inner column furniture 16,000. Next debtor 20,800. Okay, so we write debtor full 20,800 in the outer column, and 800 is transferred to revaluation account, credit side, by RDD account. Right, 800. Why? Because there are all debtors considered good debtors. Next bank. So we write balance sheet asset side, bank, inner column 8,200. Next goodwill. So we write goodwill in balance sheet asset side, bracket में लिखेंगे 10,000. Okay. Now come to adjustment. All debtor were considered as a good. So इसका हमने ऑलरेडी पोस्टिंग कर दिए. डेटर के अमाउंट लिख दी बैलेंस शीट asset side 20,800 and 800 transfer to revaluation account, credit side. Second, a contingent liability for a compensation of rupees 900 was provided. अब एक compensation contingent liability create हुई. So it's an expenses for business. So we write revaluation account debit side to contingent liability, outer column 900, and balance sheet liability side we write contingent liability, outer column 900. Clear. Next, investment were sold out in market at 10% profit. First effect, बैलेंस शीट असेट साइड इन्वेस्टमेंट लिखे हमने, इनर कॉलम 30,000 लिखेंगे लेस सोल्ड. ओके, अभी हम कितने में सोल्ड किए, कंप्लीट सोल्ड किए. राइट. सो नीचे लिखेंगे 30,000 आउटर कॉलम डैश. एंड सेकेंड इफेक्ट, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय इन्वेस्टमेंट 3,000. ओके, 30 का इन्वेस्टमेंट हमने पूरा बेचे और उस पर हमें 3,000 रुपये क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ. क्लियर. एंड प्रॉफिट विल ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड. नेक्स्ट, लोन वेर पेड ऑफ. जो भी लोन था कंप्लीट पेड ऑफ हुआ. तो हमने बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड लिखे बैंक लोन, इनर कॉलम 8,000 लिखेंगे लेस पेड ऑफ, इनर कॉलम 8,000 आउटर कॉलम डैश. Clear. Next, land and building were depreciated by rupees 800. First effect, we write on balance sheet asset side land and building, inner column 55,800 less depreciation, inner column 800, so outer column 55,000. Second effect, revaluation account debit side to land and building amount 800. Second, furniture by rupees 1,100. Again we write on asset side furniture, inner column 16,000 less depreciation 1,100, so outer column 14,900. Second effect, revaluation account debit side to furniture amount 1,100. Clear. Next,
Goodwill of the firm was valued rupees 15,000. It was to be raised in the book. गुडविल एक्चुअल में कितना दिया था ओपनिंग में 10,000 रुपीज़. अब उसकी वैल्यू रेज बढ़ के कितनी हुई है 15,000. फर्स्ट फिर राइट ऑन एसेट साइड गुडविल ब्रैकेट में क्या लिखे थे 10,000 प्लस 5,000 आउटर कॉलम 15,000. सेकेंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय गुडविल 5,000 जो बड़ा है distributed amongst the partner as per their profit sharing ratio, and their ratio is 2:1. So 5,000 multiplied by 2 divided by 5. So Anita account 2,000, Sunita account 2,000 and Kavita account 1,000. Clear? Next, Kavita was entitled to get her share in profit up to the date of her death, and profit for 1920 is estimated 10,000. So we do a working note, and at the end of this question there is a working note. So 3-month profit is 10,000. Kavita will live in business only for 3 months, so 10,000 multiplied by 3 divided by 12, and her share is 1%, so 1 by 5. So actual profit is 500 rupees for Kavita. So we write partners capital account credit side by profit and loss suspense account, and Kavita column we write 500 rupees. Okay, and last, amount due to Kavita executors was paid by NEFT. और कविता के एग्जीक्यूटर्स जो है वो हमें NEFT के थ्रू पे करना है. So first we do a total. So first we do a total of revaluation account, and revaluation accounts credit side total is higher than the debit side total, and credit side total is 3,800, and we write same total on both sides 3,800, 3,800. Out of credit side total we deduct all the debit side total, and the amount left is rupees 1,000. So we write to partners capital account in bracket profit Anita 400, Sunita 400 and Kavita 200. Second effect, partners capital account credit side we write by revaluation account, in bracket we write 400, in bracket we write profit Anita column 400, Sunita column 400 and Kavita column 200. Okay, now first we do a total of Kavita's column, and Kavita's column's credit side total is higher than the debit side total, and credit side total is 21,700. Okay, and this total we write on both sides 21,700. There is a zero total, or there is no amount in Kavita's account debit side to write to Kavita's executors loan account, Kavita's column 21,700. ओके, यहाँ पे हमने कविता के एग्जीक्यूटिव का लोन कंप्लीट पे कर दिए, मतलब अभी उसे कैश में कुछ भी पैसे नहीं देना है. देन वी डू अ टोटल ऑफ अनिता's कॉलम, एंड अनिता's कॉलम टोटल इज 42,400, Sunita's column total is 42,400, and both side total we write on debit side 42,400, 42,400. We write to balance carried down 42,400, 42,400. Second effect, balance sheet liability side, first we write capital account, underline Anita 42,400, Sunita 42,400. Okay, next, all adjustment and all items has been posted, only one item is left, that is bank. We write bank amounting to rupees 8,200 in bracket. Okay, then we add, first we write 8,200 in bracket, then add 3,000 as profit on investment. So 8,200 plus 3,000 कितने हुए 11,200 plus 800 because all RDD is good, so total is 12,000 less 500 profit paid for Kavita. So actual bank account is amount is 11,500, so we write on outer column bank 11,500. Okay, now all adjustment have done. Now we do a final total of balance sheet, and balance sheet final total is 1,17,700, 1,17,700. Now our question is tally.
and there is a working note at the end of this question. First, show for Kavita's share of profit, and second one is that Kavita's executor account was fully paid, so there is no amount transfer to a liability side. Okay, thank you students. Assalamu alaikum.